current electricity, a very simple and a very interesting chapter. We are not going to make this complicated at all. We will only learn those concepts which are necessary to solve the numericals. We will start with the most fundamental and the basic concept of current electricity now. The first and the most basic concept of current electricity is Ohm's law. What Ohm's law says. Let's say you have a device, something like this. And there is a current passing through this device, and this device has a potential difference of delta V across it. That is the potential difference of the devices delta V. And the current through the device is I. Now, every device will have its own resistance. Every device will have its own resistance represented by R. Every device has a resistance, right? Then this can be represented as just a resistance. This is R. The current through it is I, and the potential difference across the resistance is delta V. Now, what are the meanings of this symbol? I'm going to write it down. R is resistance of device. It can be anything. The device can be electric heater. The device can be bulb. The device can be player, music player, etc. The device can be anything. I is basically current through device, and delta V is basically the potential difference, PD, potential difference across the device. Delta V is the potential difference across the device. Now, given these information, what Ohm's law says is, Ohm's law says that delta V is equal to I into R. That is, potential difference across a device is equal to current through the device multiplied by resistance of the device. This is what Ohm's law talks about. Now, you need to tell me in the chat box if you understood this concept as to what is Ohm's law. Tell me. Send me messages in the chat box. One second. Let me promote my other device as host so that I can see your messages. Beautiful. Okay. Okay, so I've got a lot of A's. Acha, somebody wants me to explain it one more time. See, but I'll make it very quick for you. Ohm's law is basically a law that will relate three components. It will relate resistance of a device, current through a device, and potential difference across a device. Now, delta V is the potential difference, I is the current, R is the resistance. This is the device. This is the device. The device has potential, the device has a resistance of R, which is here. The potential difference across the resistance is delta V. It's a potential difference. So V is potential, delta matlab difference. So potential difference, and I is the current through the device. Then as per Ohm's law, delta V can be written as IR. Delta V is equal to IR. This is called as Ohm's law. This was the first quick concept. Moving forward, can I move forward? Please give me the permission to move forward.
What is the difference between potential difference and current? See, potential difference का मतलब क्या होता है? I'll tell you. Potential difference is basically that factor because of which charges flow from one point to the other point. जैसे heat flows from higher temperature to lower temperature. In the similar fashion, charges flow from higher temperature to lower temperature. Heat flows because of temperature difference. Charges flow because of potential difference. So the role of temperature in heat has the same role of potential in current. The way heat flows from higher temperature to lower temperature, here current flows, charges flow from higher potential to lower potential. Now this flow of charge is called as current. Now this flow of charge is called as current. कितनी तेजी से charge flow कर रहा है, it is called as current. Moving forward, let us quickly understand combination of resistances. Very quickly. See, you have got two popular combination of resistances. The first is called as series. The second is called as parallel. I will not go into derivation. I will directly tell you the formula. Now, how do you identify if the combination is series or parallel? Point number one, in series, current across all resistance is same. In parallel, potential difference across all resistance is same. In series, potential difference across resistance may be different. In parallel, current across resistance may be different. ध्यान देते रहेंगे. I'll make you understand how. Let's say there are two resistances in series. Resistance 1, resistance 2. This is R1, this is R2. Then, and this is connected to a, let's say, a battery, which is, let's say, EMF E. Then you will see that the current is I in R1, the same current is I in R2, which means current through the resistances are same. However, if you look at the potential difference, then the potential difference across R1 is delta V1 and the potential difference across R2 is delta V2. They can be different, not necessarily, but can be different. Also, let's talk about parallel combination. The parallel combination looks like this. In this case, this is resistance R1 and this is resistance R2. In this case, you will see that the current entering is I. However, the current will get split. You will have I1 in R1 and you will have I2 in R2. So the current turns out to be different. Yahan par. The current turns out to be different. However, the potential difference will remain same because this will be delta V and this will also be delta V. So how do you identify whether the combination is series or parallel? In series, the current through all the resistance is same. I and I left. The current through all the resistance is same. Potential difference may not be same. It can be difference, right? Delta V1 and delta V2. Whereas in parallel, the potential difference across all the resistance is same. However, the current can be different. Are you able to understand this? Tell me if you have understood this. Start commenting. Start commenting. I'm looking at your comment from another device. We will keep it very simple. Series combination है, इसका मतलब current same होगा.
पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सेम होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो सकता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा लेकिन करंट अलग हो सकता है। ये क्लियर है सबको? प्लीज गिव मी अ यस, फटाफट फटाफट फटाफट, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। Thank you. Your yeses are motivating. Moving forward, one more concept. Distribution of potential difference in series combination. Distribution of potential difference in series combination. How do you distribute potential difference in series combination? Let's say you have R1 and then you have R2. And this is connected to a battery which is supplying a potential difference of delta V. Now, since it is a series combination, I know that the current through both the resistance will be same. However, I also know that the potential difference can be different, delta V1 and delta V2. Then how do you figure out this value? I'm going to give you a formula. I will not explain you because we don't have time for explanation. Delta V1 is equal to, ये चीज मैं हिंदी में बोलूंगा, याद रखना आसान होता है। डेल्टा V1 is equal to खुद का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ध्यान से, खुद का रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस, खुद का रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस multiplied by the supply. What was the supply? The supply is delta V. Multiplied by the supply. What was the supply? The supply was delta V. Similarly, I have delta V2. Delta V2 will be, अब R1 नहीं आएगा, खुद का रेजिस्टेंस डेल्टा V2 किसके अक्रॉस है? R2 के अक्रॉस है। So खुद का रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस multiplied by the input or the supply is delta V. This is how you write down the distribution of potential difference, कि potential difference हर resistance में कैसे distribute होता है. But you need to remember that you are dealing with series combination. Please do not forget that. How many of you are able to understand this? Start commenting. कैसे याद रखना है? खुद का रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस, खुद का रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सप्लाई। कितना सप्लाई मिला? डेल्टा वी। हाँ बेटा, प्लीज रिमेंबर, सी अगर मैं V बोलता हूं तो V का मतलब होता है पोटेंशियल, बट अगर मैं और डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस और चेंज। तो मैं जब भी आपसे बोलता हूं डेल्टा V, इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। राइट? बट तुम्हारे केस में, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इन एसएससी दे यूज V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, सो तुम भी वही यूज करना। इन एसएससी दे यूज V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, तो तुम भी वही यूज करना जैसा दिया गया। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमने इस तरीके से समझ लिया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? डू आई हैव योर परमिशन? प्लीज कमेंट। ओके, कीप कमेंटिंग। ओके, ग्रेट, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। एक काम करता हूं, मैं 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर 60 सेकेंड्स। मैं चाहता हूं कि तुम फटाफट इसको देखो एंड समझने की कोशिश करो।
Last 20 seconds. All right, time to move. Now we will talk about distribution of current in parallel combination. Earlier we studied about distribution of potential difference in series combination. Now we will talk about distribution of current. In which kind of combination? In this case, we are talking about parallel combination. So distribution of current in parallel combination. Let me create a parallel combination, something like this. In this case, I'm not distributing the potential difference. This is resistance R1, this is resistance R2. The current that enters is I. The current that enters is I. But this I gets split into I1 and I2. I need to understand what is the value of I1 and I2, and that value can be identified as, ध्यान देना, I1 is equal to सामने वाले का रेजिस्टेंस, खुद का रेजिस्टेंस नहीं, सामने वाले का रेजिस्टेंस, सामने वाले का रेजिस्टेंस is R2 upon sum of resistance which is R1 plus R2. फिर से वहां पर हमने लिखा था खुद का रेजिस्टेंस, यहाँ पर सामने वाले का रेजिस्टेंस. यहाँ पर we are going to write सामने वाले का रेजिस्टेंस, सामने वाले का रेजिस्टेंस, right? And here we are going to write sum of resistance. Sum of resistance multiplied by the supply. What was the supply? The supply was I. What was the current which got distributed? The supply. The supply was I. ये बात सबको समझ में आया? Same logic पे चल रहे हैं. वहां खुद का लिखा था, यहाँ पर सामने वाले का लिख दिया. We are driven by the same logic. And if you are smart enough, then you can understand this very quickly. If you are smart enough, कैसे? I2 can be written as सामने वाले का resistance which is R1 upon sum of resistance which is R1 plus R2 multiplied by the supply. सामने वाले का resistance upon sum of resistance. No, beta यहाँ पर supply is current ना. See, in the previous case, we are basically distributing potential difference. So we are distributing delta V, and hence the supply is delta V. In the new case, which is parallel combination, we are distributing current. So the current is I, and hence the supply is I. I suppose this addresses your question. Now the question is, sir, what if अगर 3 resistance होगा तो? Beta 3 resistance का case should not be in class 10th because 3 resistance 11th में ठीक है, अभी 10th में नहीं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा. So we will stick to 2 resistance का combination only. Do I have your permission to move? एक last formula बताना है, फिर question solving start होगा. Tell me, do I have your permission to move? Come on. I need some encouragement. फटाफट. Beautiful. I got a lot of yes. That is motivating for me. So I will move forward. Next. In the next case, we need to understand power of a device. You might have felt this, understood this, seen this, heard it, that every device that you purchase from the market has a power in terms of what?
every device that you purchase from the market has a power in terms of watt. For example, yesterday I was trying to purchase a refrigerator. It was a double door convertible refrigerator, and it was written that this refrigerator has so much watt of power consumption. When you look at the yellow bulb which is there, these days these yellow bulbs are not available. However, couple of years back there used to be a yellow bulb which had a thin filament of tungsten inside it. That yellow bulb used to be of the power of 100 wattage, 80 wattage, 120 wattage, and that bulb used to get very heated up when, you know, in operating conditions. So power, what exactly is power? Power is the amount of energy, that will get released or absorbed per second. हर सेकंड में डिवाइस कितनी एनर्जी रिलीज कर देगा या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा या कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर लेगा, दैट इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ द डिवाइस, कि हाँ ये डिवाइस कितना कंज्यूम करता है. आर वी गुड विद दिस? पावर, the amount of energy used, released or absorbed by a device per second. हर सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो यूज करता है, रिलीज करता है, एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड एज पावर. आर यू ओके विद द डेफिनेशन? डू यू गेट द डेफिनेशन नाउ? टेल मी, प्लीज कमेंट. ओके, all right, great. So power of a device is the amount of energy जो कि डिवाइस यूज करेगा या कंज्यूम करेगा. अब डिवाइस के पावर को हम लिखते कैसे, ध्यान देना. This is your device. It can be anything. It can be bulb, it can be geyser, it can be refrigerator, it can be tube light, it can be anything. So this is your device. Let's say the current entering the device is I, and the potential difference across the device is delta V. Then this device will be releasing some power P. What is P here? P is basically the power. Then the definition of power is given as current through device multiplied by potential difference across device. That is the definition of power. This makes me come to the formula, that is P is equal to I multiplied by delta V. That is the formula. This is the formula for power. Now, if you apply Ohm's law to this, then Ohm's law says that delta V is equal to IR. Delta V is equal to IR. And Ohm's law also says that I is equal to delta V upon R. It means the same thing. Then in that case, power can again be written as I, delta V की जगह पे लिख दिया मैंने IR. So power becomes I square R. And I can write, instead of delta V, let me replace I. So I can be written as delta V upon R multiplied by the delta V which already existed. So power can also be written as delta V ka square upon R. So the power is going to have three formulas. But what is going to be the most fundamental formula of power? The most fundamental formula of power is going to be this: current through device multiplied by potential difference across the device. Tell me if you have understood this. आराम से देखो, this is थोड़ा सा नया concept for you. Okay, I'm looking at your comment. Please comment. Take around 60, 90 seconds. Read this. When you read it, you will understand.
I'm trying to keep it as simple as I can, as basic as I can. Now the question is, Yash Mistry ne pucha, how do we get the fundamental formula of power? Yash, beta, I would love to answer that, but time constraint hai. We will not go into any research and development at this point of time. We will stick to SSC. But if you stay back in the session, then I can help you with that formula. Abhi ke liye we'll only stick what is required in the exam, right? So let's stick to the fundamental formula. Now, I will very quickly repeat this. Everybody will pay attention because there is a demand to repeat it. See, power of a device. If you have any device, that device is going to utilize energy in any form. Electrical energy को वो utilize करेगा. So power is हर second में कितना energy utilize किया. That is power. Energy utilized in every second. हर time में कितना energy utilize किया. That is called as power. The unit of power is basically watt, or this is also written as joules per second, where joule is the unit of energy and second is the unit of time. Now, you have a device. This device ka resistance is, let's say, R. That is the resistance of the device. The current passing through the device is I. The potential difference across the device is delta V. Then the fundamental formula for power says power is equal to current through device multiplied by potential difference across device, which is current through device multiplied by potential difference across device. Fundamental formula. This is the fundamental formula. This is universally correct. This is not a modified formula. It's a fundamental formula. But then मैंने बोला यार हमने तो ओम्स लॉ भी पढ़ा है, और ओम्स लॉ डेल्टा वी आई और रेजिस्टेंस को कनेक्ट करता है. कैसे कनेक्ट करता है? ओम्स लॉ बोलता है डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, तो इसको घुमा करके लिख दिया, देन आई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर. ब्रिलियंट. इन दी फर्स्ट केस आई एम रिप्लेसिंग डेल्टा वी. कहां पर? यहां पर. सो डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, दैट गिव्स मी द फॉर्मूला आई स्क्वायर आर. इन दी सेकंड केस आई एम रिप्लेसिंग आई. कहां पर रिप्लेस कर रहा हूं? यहां पर. सो आई की जगह डेल्टा वी अपॉन आर multiplied by delta v, so I get delta v ka square upon r. Do you get the formula? I hope this is understood to everyone now. I've also repeated it. Please be very attentive. Can I move forward? Thank you so much. Now, power can also be written as energy upon time. This is also the formula of power. Therefore, energy, और इसको मैं अलग से बताता हूं. Let me delete this. Okay. Let me write down the next part, which is power of a device. हमने पढ़ लिया. Now we will talk about energy utilization for a device. एक डिवाइस कितनी एनर्जी को यूटिलाइज करता है? पावर तो हमें पता चल गया. Now this is the device that I've got. The current entering in the device is I. The potential difference is delta V. The resistance of device is R. Then the power of device is written as, the power P of device is written as I into delta V, which is nothing but I square R, which is nothing but delta V ka square upon R. That is the power. But I know that power is equal to energy upon time. This implies, or this tells me, that energy is equal to power multiplied by time. And if energy is equal to power multiplied by time, then what is the symbol for energy in your textbook? Let me check. Is it Q? क्या दिया हुआ symbol energy का? The symbol for energy is, अरे बाबा कोई symbol ही नहीं energy का. H. So the symbol for energy in your textbook is H is equal to power multiplied by time. So H can have multiple formula now. कैसे? As per the first case, H can have formula power. Power is I multiplied by delta V multiplied by time. According to the second formula,
H can have another formula, which is power, which is I square R multiplied by time. H can also have a formula, power, which is delta V square by R multiplied by time. Is this clear to all of you? ये तो बहुत सिंपल था, ये तो एक ही कॉन्सेप्ट यूज करता था, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और कुछ नहीं लगा यहाँ पे। अब तुम्हें समझ में आया कि वो आई स्क्वायर आर टी आता कहां से है? नाउ डू यू गेट इट कि वो आई स्क्वायर आर टी कहां से आ रहा था? आई एम गिविंग यू 60 seconds टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ, ऑब्वियसली बात है बेटा, दिस H is basically, now this H is basically energy, and in your case the energy is nothing but heat energy. ठीक है? This H is basically energy. Rather, I will tell you, instead of energy, let us be more specific. I will tell this to be electrical energy. This H is basically electrical energy because it is produced because of electricity. However, that electricity can also get converted into heat energy. I hope that answers your question. Somebody had asked it. Okay, beautiful. Do I have your permission to move forward? Okay. Somebody asked me a question कि sir, power can also be work upon time. हाँ बेटा, power can definitely be work upon time. I'll tell you how. See, when I say that power is equal to energy upon time, I can also write this as power is equal to work upon time. The reason is energy and work are interconvertible. The reason is energy and work beta are interconvertible. So I can also say that work is equivalent to energy. In fact, work करने से energy बढ़ता है. Is that okay? Beautiful. आगे बढ़े क्या हम लोग? आगे बढ़ सकते हैं। मेरे पास अभी 20 मिनट्स है, फटाफट हमें डिस्कशन करना है, बहुत सारा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, वी आर ऑल सेट टू अटैक द क्वेश्चंस एंड सॉल्व इट। आर वी गुड? कैन वी मूव फॉरवर्ड? टेक्स्ट बुक खोल लेता हूं मैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर है ना, एक मैंने भी टेक्स्ट बुक में देखा, एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉल्ड एज KWH। KWH, इसका मतलब मैं समझाता हूं क्या होगा KWH। K का मतलब होता है किलो, W का मतलब होता है वॉट, H का मतलब होता है आवर। बट हमें इसका सही इस्तेमाल करना है, हमें सब कुछ ऐसा यूनिट में लिखना है, और अगर हमें सब कुछ ऐसा यूनिट में लिखना है, देन किलो विल बिकम 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय वॉट विल बिकम जूल अपॉन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय आवर। आवर क्या बन सकता है? आवर इज गोइंग टू बी 3600 सेकेंड्स। आवर इज गोइंग टू बी 3600 seconds because 1 hour is equal to 60 minute. 1 minute is equal to 60 seconds. Therefore, 1 hour is equal to 60 multiplied by 60 seconds, that is 3600 seconds. So 1 kilowatt hour को हम किस तरीके से represent करेंगे? 1 kilowatt hour को हम represent करेंगे 3600. So this will be 3.6 into 10 की पावर 6 सेकेंड्स के सेकेंड्स कट गए और यहां रहा जूल। सो बेसिकली 1 kilowatt is equal to this, 1 kilowatt hour is equal to so many joules. So I can also write that 1 kilowatt hour is equal to 3.6. 10 की पावर 6 is called as mega. Mega is capital M, mega joules. 10 की पावर 6 is mega. Mega is capital M, which is mega joules. This is mega. This is kilo. ये समझ में आ गया सबको? 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 1 किलोवाट आवर is
3.6 mega joules or 3.6 into 10 की power 6 joules. Are we good with this? Can I move forward now? अभी हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. आगे बढ़े. Can I move forward? 3.6 कहां से आया बेटा? देखो ये जो 3600 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.6 into 10 की पावर 3. 3 डेसिमल्स को शिफ्ट कर दिया. ये तो हमने मैथ से पढ़ा हुआ है ना, डेसिमल में 3 डेसिमल को मैंने शिफ्ट कर दिया और ये 10 की पावर 3 इसके साथ मिल करके 10 की पावर 6 बन गया और यहां से 3.6 यहां पर आ गया. ठीक है, इज दैट ओके? आगे बढ़े, आगे बढ़े. ब्यूटीफुल. चलो, now we are going to attack the questions. Let me take the first numerical. Now everybody open your textbook, go to page number 61. Everybody open your textbook and go to page number 61. So we'll go to textbook. I will start with a new page. Okay, so we'll go to textbook 61 and we have question number 12 ka part A. Now let me read the question for you. The question says heat energy is being produced in a resistance. Now heat energy is produced in a resistance at the rate of 100 watt. इसका मतलब क्या है? That there is a resistance R जिसके थ्रू करंट शायद आई जा रहा होगा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी होगा एंड इसमें से हीट डिसिपेट हो रहा है, इसमें से हीट बाहर निकल रहा है. और वो हीट बाहर कैसे निकल रहा है? द पावर इज गिवन एज 100 वॉट. क्या इतना सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन की पहली लाइन. क्या क्वेश्चन का पहला लाइन सबको समझ में आया? दैट हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ऑन इन अ रेजिस्टेंस, यानी कि देयर इज अ रेजिस्टेंस आर. मैंने बना दिया. अब रेजिस्टेंस है तो बॉस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही होगा, तो वो भी दिखा देते हैं. तो देयर इज अ रेजिस्टेंस आर एंड द करंट इज आई. द रेजिस्टेंस इज आर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डेल्टा वी. पावर कितना निकल रहा है? सी 100 जूल नहीं है. इफ इट वुड हैव बीन 100 जूल तो वो एनर्जी होता, वो हीट होता, वो वर्क होता. बट यहाँ पर 100 वॉट है, इसका मतलब पावर है. और अगर पावर है तो पावर इज इक्वल टू 100 वॉट. अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि पूछा क्या है. द करंट इज 3 एम्पियर. अरे वाह, ये तो करंट भी इसने बता दिया. यानी कि आई, पावर की वैल्यू तो मुझे पता ही थी, इसने मुझे करंट की भी वैल्यू बता दी एंड इट इज 3 एम्पियर. बहुत बढ़िया, यूनिट भी सही दे रखा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? आर कितना है? नाउ ध्यान देना, देखो पावर के तो मेरे पास 3 फॉर्मूला है. आई इंटू डेल्टा वी और आई स्क्वायर आर और डेल्टा वी का स्क्वायर अपॉन आर. तुम लोग मुझे बताओ कि मैं कौन सा चूज करूं. Which formula is the most suitable formula in this case? The formula is I square R. Very beautiful. So I will choose I square R. So I have the formula power is equal to I square R and I will input the value. Therefore यहाँ से resistance is equal to power upon I square and power is 100 watt. I square is 3 square which is 100 upon 9 which is 11.11 ohm. So your resistance turns out to be approximately 11 ohm. Is this question clear to all of you? Do you have an imagination of this now? Tell me. Keep commenting, keep commenting. 3 more questions to go. If time permits, I will take more questions. Very nice, very nice, very nice, very nice. Thank you. Can I take the next question now? आगे बढ़े. चलो 30 seconds देता हूं. I give you 30 seconds to read the question. The unit of energy, beta, the unit of energy is joules. The unit of energy is joule. Unit of energy is also calorie, but unit of heat energy is calorie. So जब calorie दिया होगा तो उसको जूल में कन्वर्ट करना, 4.2 joules. और जूल के नीचे सेकंड होगा तो वॉट हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी अपॉन टाइम बन जाएगा. All right, 10 more seconds. Then I will move to the next question. 10 more seconds. I will move to the next question. पावर कैसे मिला? आयुष सिंह.
Ayush, read the question. The energy is produced at the rate of 100 watt. Look at the unit watt. Watt is a unit of power. इसका मतलब power 100 watt. Unit से पहचाना है यहाँ पर कि unit is 100 watt. Now, can you explain the first line? हाँ बेटा. See, energy, heat energy is produced at the rate of 100 watt. यानी कितनी तेजी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी हर सेकंड में कितना एनर्जी निकल रहा है, यानी कि हर सेकंड में 100 वाट का मतलब है कि हर सेकंड में 100 जूल निकल रहा था, यानी पावर कितना हो गया 100 वाट, क्वेश्चन में दे रखा है. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अप्रोक्सीमेट क्यों लिखा? क्योंकि आंसर 11.11 आया, लेकिन टेक्स्ट बुक ने 11 दे रखा है, तो 0.11 छोटा वैल्यू है, ड्रॉप कर दिया. नहीं, कोशिश करो कि तुम एग्जैक्ट आंसर लिखा करो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ पे अटेंशन. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 एंड वी हैव डी. ध्यान से देखेंगे सब लोग. 2 टंगस्टन बल्ब of wattage 100 watt and 60 watt power. So there are 2 tungsten bulb. So we have first bulb and we have second bulb. अगर तुम ध्यान से देखोगे, then a bulb is basically a resistance. एक वायर ऐसे अंदर जाता है, यहाँ रेजिस्टेंस होता है, वायर बाहर आता है. एक वायर अंदर जाता है, यहाँ रेजिस्टेंस होता है, वायर बाहर आता है. So this basically we have got 2 bulbs. Both are tungsten bulbs. हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं, 1 second. Now we will say that this particular bulb is, let's say this is bulb A, this is bulb B, this is bulb A and this is bulb B. दोनों का नामकरण कर दिया, नॉमेनक्लेचर, नेम दे दिया उसको. दोनों ही टंगस्टन के हैं, बट ध्यान देना, दोनों बल्ब को, क्वेश्चन सेज 2 टंगस्टन बल्ब ऑफ वॉटेज 100 वॉट एंड 60 वॉट. ओके, इसका मतलब इसका वॉटेज, ए का वॉट 100 वॉट है और बी का पावर 60 वॉट है. दोनों को किससे कनेक्ट किया है? दोनों को कनेक्ट किया है सेम काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से. दोनों को कनेक्ट किया है सेम काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से. कहने का मतलब ये है कि इस बल्ब को मैं एक रेजिस्टेंस की तरह दिखा सकता हूं और उस रेजिस्टेंस को मैं बोल सकता हूं RA. दूसरे बल्ब को मैं एक और रेजिस्टेंस की तरह दिखा सकता हूं, उसको बोल सकता हूं RB. और इन्होंने ये भी बोला है that both the resistances are connected to the same potential difference. यहाँ पर both the resistances are connected to the same potential difference which is 220 volt. यहाँ पर भी कितना लगा रखा है? 220 volt, which is nothing but delta V, which is nothing but delta V. And हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो कितना पावर डिसिपेट कर रहा है? वो पावर डिसिपेट कर रहा है 100 वॉट. और हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो कितना पावर डिसिपेट कर रहा है? दूसरा रेजिस्टेंस पावर डिसिपेट कर रहा है 60 वॉटेज. तो 100 वॉट जो होगा वो बन जाएगा पावर ऑफ ए रेजिस्टेंस, 60 वॉट बन जाएगा पावर ऑफ बी रेजिस्टेंस. और पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों में सेम है. डेल्टा वी अक्रॉस ए 220 वोल्टेज है एंड डेल्टा वी अक्रॉस बी भी 220 वोल्टेज है. इंफॉर्मेशन सबको समझ में आई? ये मेरा सवाल है. आर यू एबल टू एब्सॉर्ब द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन? आर यू एबल टू एब्सॉर्ब द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन? बोला क्या है? 2 टंगस्टन बल्ब है ए एंड बी, 2 टंगस्टन बल्ब है ए एंड बी. दोनों का रेजिस्टेंस नहीं पता, मैंने बोला एक का RA दूसरे का RB. दोनों का पावर कितना है? 100 watt and 60 watt. So obviously I have shown the power as 100 watt and 60 watt. Both are connected to the same potential difference which is 220 volt. That is the information so far. But आगे क्या बोला है? If they are connected in parallel, अगर दोनों parallel में connect करेंगे, so एक चीज ध्यान रखना, before you go to parallel, you need to understand कि boss resistance की value कितनी है. Because parallel combination तो तब भी solve करूंगा ना when I have the resistance value. How do I solve series in parallel when I don't have the resistance value? So I should know the resistance value. अब ध्यान देना, यहाँ पर है ना, पावर के बहुत फॉर्मूले होते हैं. पावर का फॉर्मूला होता है I into डेल्टा V. पावर का फॉर्मूला होता है I square R. पावर का फॉर्मूला होता है डेल्टा V का स्क्वायर अपॉन R. Now tell me
कि इन दिस गिवन सिचुएशन तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, विच इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्मूला फॉर यू। सी ध्यान देना, करंट इज नॉट गिवन, करंट इज नॉट गिवन, तो हम फंस जाएंगे। करंट इज नॉट गिवन, तो यहाँ पर काम नहीं बनने वाला, तो पहला फॉर्मूला हमारा यूज नहीं हो पाएगा। So which is the most suitable formula in this case? Yes, absolutely. It's the third formula that is most suitable because मुझे power दे रखा हुआ है. If I use the third formula, what do I understand? I get the formula as power is equal to delta V का square upon R. This will give me R is equal to delta V का square upon power. ये बन जाएगा formula. Because in both the questions, delta V is given and power is also given. Now I will apply this formula to both A and B. So I can say that in the first part and in the second part, I can say that resistance of A is basically delta V across A, the whole square upon the power of A. Resistance of B can be written as the potential difference across B, the whole square upon the power of B. Now, using this formula, yahan tak sabko clear hai? Do you get this? Is this clear to all of you? Please comment very quickly, very quickly. We have got 2 more questions to go. yahan tak सारा formula clear हो चुका है सबको? Everyone. Keep commenting, keep commenting. Tell me. yahan tak सबको सब कुछ clear है? Okay. So this is what we have got. Very nice. Now we will get the value of the resistance. निकाल सकते हैं resistance. Resistance का value कितना होने वाला है? Resistance का value होगा, resistance का value होगा. Now, वैसे इस क्वेश्चन के 2 अप्रोच है. ये अप्रोच बड़ा वाला अप्रोच है. इसके बाद मैं तुम्हें यस यू कैन डायरेक्टली फाइंड द करंट का फॉर्मूला, बट मैं तुम्हें कुछ और भी सिखा रहा हूँ. सो इन दिस केस यहाँ पर हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं. एब्सोल्युटली बेटा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. आई विल टेल यू द सेकंड अप्रोच एज वेल. तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें ना पहले शॉर्टर अप्रोच बता देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें डिटेल्ड अप्रोच बताता हूँ. सो पहले मैं तुम्हें शॉर्टर अप्रोच दे देता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट है ना, सी आई एम टेकिंग दिस पार्ट, इसको मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ. इसके बारे में हम थोड़ा रुक करके बात करते हैं, ठीक है? सिंस यू हैव मेंशन्ड कि हम शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में. ध्यान से देखना. सी नाउ इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, then parallel में this will look like this, RA RB, and this will be connected to, let's say, 220 voltage ऐसे. Then in that case this will become the main current I, and since A and B are in parallel, हमें यहाँ पर मेन करंट निकालना है. हाउ डू आई कैलकुलेट द मेन करंट? द क्वेश्चन सेज कि मेन करंट निकालो, कि मेन करंट कितना है कंडक्टर में. आई विल सिंप्लीफाई दिस केस. इफ आई सिंप्लीफाई दिस आई गेट यहाँ पर, सी इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम जानते हो ना क्या होता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में इफ यू रिमेंबर इट वेरी वेल, मैं यहां बता देता हूं. इफ यू हैव सीरीज combination, then if this is RA and this is RB, then this can be represented by R equivalent, just one single resistance, and R equivalent is nothing but RA plus RB. However, in parallel combination, you can always write, if this is RA and if this is RB, then this combination
can be represented by a simpler case, which is R equivalent, and you can write R equivalent is equal to RA into RB upon RA plus RB. I hope you have already studied this formula in the past, because ये future में भी काम आने वाला है. Can you please comment me कि ये formula आपने past में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? The combination of resistance. 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. Yes. इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, ये मैंने कवर नहीं किया था बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा था कि आपको ऑलरेडी आता है, बट कोई बात नहीं, अभी मैं कवर कर लेता हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस कॉम्बिनेशन कैन एक्चुअली बी सिंप्लीफाइड लाइक दिस. एकदम सिंपल सा कॉम्बिनेशन ऐसा. दिस इज आर इक्विवेलेंट, दिस इज 220 वोल्ट, दिस इज द करंट आई. नाउ यहां पर ध्यान देना, आर ए used to dissipate 100 wattage, RB used to dissipate 60 wattage. तो मेरे घर मैंने क्या किया है, मैंने अपने टेबल पे 2 बल्ब लगा दिया है. एक बल्ब जो है 100 रुपए खर्च करता है और दूसरा बल्ब 60 रुपए खर्च करता है. तो कोई मुझे ये बताएगा कि टोटल कितना खर्चा हुआ? मेरे पास 2 बल्ब है, एक बल्ब 100 रुपए खर्चा करता है, दूसरा 60 रुपए खर्चा करता है. तो कॉमन सेंस से कैन यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल एक्सपेंस? द टोटल एक्सपेंस इज गोइंग टू बी 160 wattage. It's going to be 160 wattage, and this is understood to almost everyone. Now ध्यान देना यहाँ पर एक और चीज. This is 220 volt. This 220 volt is across this resistance. This 220 volt is across this resistance. Now यहाँ पर the सबसे suitable formula that we can use is, the most suitable formula in this case that we can use is this, that you have a potential difference of delta V is equal to 220 voltage, and you have a current I. So the power P can be written as I into delta V, which implies that I is nothing but power upon delta V. So power आपका कितना हो जाएगा? It's going to be 160 watt upon delta V is going to be 220 voltage. यहां से आपको पता चलेगा that current is equal to 0.72 ampere. Is this clear to all of you? Is the solution clear to all of you? यहाँ देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैं तुम्हें ना अभी फिर से एक बार बताऊंगा. मतलब दिस वाज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अलग से, कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन कोई बाहर से भी आ गया तो हाउ डू यू डील अबाउट इट. सो लेट मी कॉपी दिस, लेट मी डिलीट इट. फॉर द टाइम बिंग टेल मी, दिस इज द सिंपलेस्ट सोल्यूशन ऑफ ऑल. क्या ये समझ में आ गया सबको? वेरी क्विकली, टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, RA RB को सिंप्लीफाई किया, we get R equivalent. RA was spending 100 rupees, RB was spending 60, so R equivalent will spend 160 volt, 160 wattage. The supply is 220 volt. तो हमें डिवाइस का रेजिस्टेंस पता चल गया, हमें उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, we know the current. We'll use the formula, this, that power is equal to I into delta V. So I is equal to power upon delta V, which is 160 upon 220, which is approximately 0.72 ampere. Is this clear to all of you? Can you please make it happen? Jaldi se batao. Send me a text. Send me a text. Okay, amazing. Now, यहाँ पर मैं ना कुछ एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज पढ़ाने वाला हूँ, उसके लिए मैं पहले पेस्ट कर देता हूँ इसको. Okay. Now, since this is clear to you, मैं एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, because that will enhance your understanding about this chapter. That will really enhance your understanding. See, यहां पर बल्ब ए का रेजिस्टेंस, बल्ब ए का पावर पता है, बल्ब ए का वोल्टेज पता है, तो रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है. कैसे? वी हैव द फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू डेल्टा वी द होल स्क्वायर अपॉन आर, एंड दिस टेल्स मी दैट R is equal to delta V the whole square upon power.
यहां से RA को लिखा जा सकता है as delta VA the whole square upon power of A, and RB लिखा जा सकता है delta VB the whole square upon power of B. So if you want to calculate the resistance RA, you will have the resistance RA as delta V, which is 220 square upon 100. You can write the resistance of RB, which is 60 square upon, 220 square upon 60. This is how you can calculate the resistance, the unknown resistance जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता था. Are we good with this? Are you able to understand this extra concept? How can you figure out? Everyone, give me a yes. Now we'll take on the next question. Give me a yes, fatafat. Quick, fast. Tell me. All right. Now we studied about the extra concept. Now I'll take up the next problem. The next problem is question number 12, ka C. Let's read the problem. Beta, your question is why are we finding resistance? No, finding resistance is an extra concept that I have taught you. It was not the part of the question. The part of the question was as simple as this. The question was as simple as this. However, I also taught you कि अगर resistance निकालने की नौबत आ गई, then how do you figure out the resistance as well using the formula? Are we good? Okay. Now, in this case, who will spend more electrical energy? Who will spend more electrical energy? We have a TV set and we have a heater. We have a TV set and we have a heater. Who will spend more electrical energy? That is what is asked to us. This is a very simple question. टीवी सेट का पावर कितना है? टीवी सेट को मैंने बोल दिया A, हीटर को मैंने बोल दिया B. What is the power of TV set? The power of TV set is 500 watt. What is the power of heater? The power of heater is 600 watt. अगर तुम देखने जाओगे, then you will see that the power of heater is more than the power of TV set. That is power, but energy is given as power into time. So the time टीवी सेट ए कितने समय तक ऑपरेट किया गया? टीवी सेट ए को ऑपरेट किया गया फॉर 30 मिनट्स. एंड टीवी सेट बी को कितना ऑपरेट किया गया? टीवी सेट बी को ऑपरेट किया गया फॉर 20 मिनट्स. For 20 minutes. Now 30 minutes can be written as 30 into 60, which is 1800 second, and 20 minutes can be written as 1200 second. अब अगर तुम टाइम में देखोगे, then time of A is greater than that of B. But we don't need to compare time, we don't need to compare power, we need to compare कि energy किसने ज्यादा लिया. So energy, H can be written as, we know that heat energy is power into time. So heat energy of A is power of A multiplied by time of A, and heat energy of B is power of B multiplied by time of B. Now power of B is given as 500 multiplied by time, which is 1800, and power of B is given as 600 multiplied by time, which is 1200, तुमने एक चीज का यहां पर ध्यान दिया होगा that I am sticking to SI unit, watt second. मैंने मिनट को कन्वर्ट कर दिया for the sake of understanding. What does this tell me? 18 5s are 90, and then you have 4 more zeros. This is the value that I have. Now यहाँ पर 12 6 is 72, and then I've got 4 more zeros, which is this. Now when you compare, you will end up seeing that the heat energy of TV set is greater than heater. So TV set is the answer. Are we good? Are we good? Is this understood? Simple था? Simple था? Yes or no? Can I move on to the next question? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था ये. Can I move on to the next question? Can I move on to the next question?
Okay, thank you. Now I'll take the last question, which is question number 12, the D part. We know I'm exceeding time. I know, but I need to complete the task that I've been assigned. Let's talk about the last question, which says an electric iron is 1100 watt. There is an electric iron which is 1100 watt. So there is 1100 watt electric iron. This is operated for 2 hours every day. This is operated for 2 hours every day. This is what is given to us in the question. कि iron को हमने 2 घंटे रोज यूज किया. What will be the consumption? The question is, what will be the expense or what will be the electrical consumption for that in the month of April? So they are basically asking कि the bill in April, April में bill कितना आएगा? What will be the bill in April? Now I will tell you that the bill in April will depend on the amount of consumption. It will depend on the amount of energy consumption. It will depend the amount of energy consumption. कि आपने energy कितना consume किया. Now, in order to understand this in a very simpler way, I'll simply tell you कि आपके घर पे रोजाना 1 लीटर दूध आता है. अच्छी बात है. आपके घर पे रोजाना 1 लीटर दूध आता है. अप्रैल के महीने में होता है 30 दिन, 30 डेज. तो एक महीने में कितना लीटर दूध आया? 30 लीटर्स. 1 लीटर दूध जो है 40 रुपए का है. तो 30 लीटर्स दूध कितने का होगा? 30 into 40 which is 1200 रुपए. यानी आपका महीने का बिल कितना आया? बताओ, मंथली बिल कितना आया? दूध का बिल कितना है मंथली का? 1200 रुपए. कैसे कैलकुलेट किया? आपने बोला पूरे महीने में कितना दूध कंज्यूम हुआ. सो हम यहाँ पर अब कैलकुलेट करेंगे कि पूरे महीने में. माय पर्पस इज, सी, बिल इन अप्रैल is equal to amount of energy consumed. Amount of energy consumed will be energy consumed in 1 day multiplied by 30 multiplied by the price of energy. The price of energy. ये clear हुआ सबको? Is that okay? Multiplied by the price of energy. ठीक है? Now we need to calculate कि हर दिन में energy कितना consume हुआ. So first I'll calculate energy consumed in 1 day. That will be equal to power multiplied by number of, or power multiplied by time in 1 day. Power multiplied by time in 1 day. Power is 1100 watt multiplied by time is 2 hours. So I will improve this. कैसे? I will write this as, this looks like 2200 watt into hour. What I will do is, I will take 3 decimals to the left and I will write this as 2.2 kilowatt hour. Because this can also be written as 2.2 into 10 की power 3 watt into hour, and 10 की power 3 becomes kilo. Is this clear to all of you? Is this clear to all of you? What do we need to calculate here? We need to calculate the amount of energy consumption in the month of April multiplied by the price of energy. Now, अप्रैल के महीने में होते हैं 30 दिन. हर दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ? यानी हर दिन में कितना दूध आया? 1 लीटर. 30 दिन में कितना आया? मल्टीप्लाइड बाय 30, 30 लीटर. हर लीटर का प्राइस कितना है? मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ एनर्जी. इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि सामने का जो बिल आने वाला है वो बिल कितना है. ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज, रिया ने मुझे पूछा है कि सर, व्हाई आर वी नॉट कन्वर्टिंग आवर्स इनटू सेकंड्स? The question by Riya is, why are we not converting hours into seconds? Yes, Riya, this is a very important question. और ये मैं तुम्हें बाद में बताने वाला था, but since तुमने पूछ लिया है, I'm going to answer this.
If you look into the question, then in the bracket they have given that the price is rupees 5. The price is rupees 5 per unit of energy. Per unit of energy. एक यूनिट का 5 रुपए है. Now for your kind information, one unit of energy is equal to 1 kilowatt hour. इसीलिए तो पढ़ाया था कि किलोवाट आवर होता क्या है. 1 unit of energy is 1 kilowatt hour. Riya, is that okay? समझ में आ गया? And hence we are not converting hour into second because हमें यहाँ पर hour चाहिए क्योंकि हमें kilowatt hour बनाना है. Now, so we understand that हर दिन 2.2 kilowatt hour consume हुआ. Therefore, energy consumed in April के महीने में कितना energy consume हुआ? That will be energy consumed in a day, which is 2.2 kilowatt hour multiplied by 30, which is 66 kilowatt hour. Is this okay with all of you? Do you understand 66 कैसे आया? हर दिन में 2.2 किलोवाट आवर कंज्यूम हो रहा था. 30 डेज में कितना होगा? 2.2 into 30. तो वहां से भी अंडरस्टैंड कि पूरे महीने में 66 किलोवाट आवर आया था. जैसे पिछली बार पूरे महीने में 30 लीटर दूध आया था, यहाँ पर 66 किलोवाट आवर कंज्यूम हुआ है. दिस मींस 66 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं. नाउ therefore bill is equal to कितना यूनिट कंज्यूम हुआ? 66 यूनिट्स कंज्यूम हुआ. और आपका प्राइस कितना था? द प्राइस वॉज 5 रुपीज पर यूनिट. द प्राइस वॉज 5 रुपीज हर यूनिट का. देयरफॉर बिल कितना निकल कर आ गया? 5 into 66 is 330 rupees. Is 330 rupees. Is 330 rupees. ध्यान से देखेंगे सब लोग and tell me. I'm showing you the complete screen. फटाफट 30 सेकेंड में देखो और मुझे बताओ कि क्या डाउट है इसमें. I'll clear it off. The question had a very simple approach. 30 seconds. Tell me if there is anything that you don't understand. Anything. All right. So everybody has understood and there is no doubt. Now, Dharmraj is asking, sir, what if we would have converted kilowatt hour initially? I will say Dharmraj ki kilowatt hour इनिशियली कन्वर्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है. तुम चाहो तो इसको पहले से कन्वर्ट कर दो, चलेगा, परफेक्टली फाइन. इसको तुमने बोला कि 1100 वॉट की जगह पर आई विल राइट इट एज 1 किलोवाट, चलेगा. सो 1.1 into 2 अल्टीमेटली 2.2 किलोवाट आएगा. सो नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज प्योर मैथमेटिक्स. यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है.